Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss question number 4 for paragraph completion. As I promised, we are solving one question every day for all the 5 days this week because we are practicing paragraph completion based on different parameters we have discussed, right? तो कौन से पैरामीटर्स है जो हमने डिस्कस किए? सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्कोप. स्कोप मतलब क्या क्या टॉपिक्स उस पर्टिकुलर पैसेज में कवर हुए हैं, वही टॉपिक्स हमको इसमें भी ढूंढने हैं, उसके सारे जो चॉइसेस हैं, आंसर चॉइसेस, उसमें भी ढूंढने हैं, राइट? तो उसका स्कोप क्या है, उसका स्केल क्या है, मतलब कितने पैमाने पे वो डिस्कस किया गया है, कितने लेवल पे डिस्कस किया गया है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी, इन दैट you have to make sure you are choosing an option which matches the scale of that passage. If we are talking about a city, and in the passage if we start talking about entire universe, then we have expanded that particular scale way more than it actually is in that passage, so that answer choice won't suit that passage, right? So इसे कहते हैं scale. स्कोप हो गया, स्केल हो गया. द नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूटी. कितना कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली हम उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक in the last question we were talking about digital transformation in communication, right? So if we are constantly talking about communication and suddenly we start talking about entirely something different, right, that would be a red flag. You don't have to select that option. So consistently एक ही चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी आपके ऑप्शन में भी मेंटेन होनी चाहिए, राइट? कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट थिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टोन. टोन कैसा है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है? अब अगर कॉन्स्टेंटली हम पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हैं, नेगेटिव टोन में बात कर रहे हैं, लेट्स से पैसेज में, और ऑप्शंस में हमको लेट्स से पैसेज में पॉजिटिव है लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव ही नेगेटिव टोन समझ में आ रहा है, तो जो ऑप्शन पॉजिटिव टोन के साथ जाता है वही ऑप्शन सुटेबल होगा. सो ये कुछ पैरामीटर्स है बेस्ड ऑन विच we solve paragraph completion question type. So this was a very quick revision for all of you. Now let's start the question, right? हम पहले पढ़ेंगे question. Education reform has been a topic of debate in many countries, focusing on ways to improve students' outcome and adapt to changing societal needs. So यहाँ पर मेन आइडिया क्या है? हम बात कर रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म के अलग अलग कंट्रीज में, राइट? काफी सारी कंट्रीज में. तो मेन वे क्या है? वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स. हमको क्या ढूंढना है इसमें? स्टूडेंट आउटकम्स और जो सोसाइटी की बदलती ज़रूरतें हैं, चेंजिंग सोसाइटल नीड्स, उसके हिसाब से वो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म होना, रिफॉर्म होना ज़रूरी है, राइट? Recent proposals have emphasized the importance of integrating technology in the classroom. So टेक्नोलॉजी का यूसेज ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में करना होगा, वरना बच्चे पिछड़े रह जाएंगे. They won't be able to match with the flow of the world, right? Because on global level we are constantly using technology, and if they are not using it in the classroom, they are not learning from their early age, there will be a gap in what the world requires, industry requires, and what they are learning. So integrating technology into classroom to enhance learning experiences and prepare students for digital future. So हम किस किस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्कोप क्या है इसका? स्कोप है एजुकेशन का रिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के आउटकम और सोसाइटल नीड्स. तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डिजिटल फ्यूचर, राइट? सो ये हमारे टॉपिक का स्कोप है. अब देखते हैं हमारी आंसर चॉइसेस क्या क्या है, राइट? और हम क्या कह रहे हैं, एक और चीज हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो है टोन. जो चेंज के प्रति हमारी टोन है इस पैसेज में, वो कैसी है? पॉजिटिव है. हम कह रहे हैं इसकी जरूरत है, इट्स नॉट अननेसेसरी, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी नेसेसरी, राइट? सो स्कोप पता चल गया, ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव है. और स्केल क्या है? अगेन वी आर टॉकिंग
ऑन ओवरऑल लेवल, राइट, हम बात कर रहे हैं जनरल, पूरे विश्व में ये चेंजेस चल रहे हैं, राइट. Okay, now let us read the options that we have here. Technology integration in classrooms has been shown to increase student engagement and provide new learning opportunities, right? So ये भी पॉजिटिव जा रहा है आंसर, और ये टेक्नोलॉजी इस टॉपिक का कंटिन्यूएशन भी लग रहा है, राइट. सो ये ऑप्शन हो सकता है, पर बाकी ऑप्शंस पहले हम पढ़ेंगे. देयर हैज बीन वाइडस्प्रेड अपोजिशन टू एजुकेशन रिफॉर्म. अब हम कह रहे हैं वाइडस्प्रेड अपोजिशन, वी आर गोइंग एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है पैसेज, तो ये ऑप्शन जो हमने अभी पढ़ा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो ये पॉसिबल नहीं है, राइट. दिस कैन नॉट बी अवर ऑप्शन. Education reform efforts are primarily concerned with increasing funding for schools rather than pedagogical improvements. अब ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस ही नहीं की पैसेज में, ये ना ही कंटिन्यू कर रहा है हमारे थॉट को जो पैसेज में दिया गया है. सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में ही नहीं है. दिस इज नॉट इन, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ द टॉपिक और द स्कोप of this particular passage, right? Next is the focus on technology in education has led to a reduction in physical education and arts programs. Again, ये भी स्कोप के परे है, ये डिस्कस नहीं हो रहा है. हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की वजह से नुकसान की बात की जा रही है यहाँ पे. अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट negative side of it, which we don't want, because in passage we are not talking about anything negative, right? We are saying that these reforms are required, integration of technology is required, right? So this is something we should avoid. Now the only option that we have here is option number A. This is correct, because we are talking about technology integration in classrooms in continuation with the topic, and we are also talking about the positive effects of it, right? So scope और tone दोनों match हो रहा है. That's the reason this is our correct answer. I hope by now you have understood how you are supposed to approach these types of questions. See you in the next video with another question, that is question number 5 for paragraph completion.